Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of the quarantine series. Thank you very much for your lovely feedback. बहुत मजेदार feedback. 13 साल की ट्रेनिंग में इतना अच्छा फीडबैक और इतने लंबे लंबे खतूत नहीं मिले जितने क्वारंटीन सीरीज इस एक महीने कोविड टाइम से मिल गए हैं. हम सब कलेक्टिव ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं और कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से भी. और ये वक्त है मजीद चीजें जानने का ताकि जब हम बाउंस बैक करें so we are back with better ideas, with skills which are relevant, and also this time is very sad time अगर आप सिर्फ अखबारात और न्यूज़ के पीछे पड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा. मेरे साथ जो शख्सियत हैं बहुत ही सालों से मैं जानता हूँ और सालों से नहीं बदली. जवान से जवान होती रहती है, स्माइल बड़ी से बड़ी होती रहती है और इनके इर्द गिर्द जो एक्टिविटी है वो ख़त्म नहीं होती. आज का मौजू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन. जब मैं इस हवाले से उनसे बात कर रहा था उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं बिल्कुल क्रिएटिव या मैं क्रिएटिव नहीं. एंड देन वी chatted about it that she has been at the epicenter, at the helm of a lot of creativity. She has been part of a lot of creative circuits. Her name is Jehan Ara. और जैसा नाम है वैसा ही जहाँ इर्द गिर्द दो बड़े जहाँ जिसमें पाशा जो कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है और बेशुमार सॉफ्टवेयर हाउसेस स्मॉल बिग को प्रमोट करने में, एक्सपोर्ट वर्दी बनाने में, उनके लिए एडवोकेसी करने में और उनको नेटवर्क कराने में बहुत अहम रोल रहा है. जहाँ has been at the forefront with that. And Nest.io, with a few years ago, a wonderful incubator that has sprung out in Karachi and has a very strong footing now. बेशुमार नौजवानों को मैंने वहाँ पे अपने ख्यालात, अपने ख्वाबों को पाकिस्तान के मसाइल से जोड़ते हुए एंटरप्रेन्योर्स बनते हुए देखा है. लंबा सफ़र है. जहाँ आ रहा है इस पे लगी हुई है. एनर्जी, पैशन, टैलेंट, स्पिरिट के लिए जानी जाती हैं. हमारी उस्ताद है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ मुमकिन बनाने वाली. थैंक यू वेरी मच आपा फॉर टेकिंग आउट द टाइम. You're welcome. It's great to be here. Just having a conversation with you, man. थैंक यू, थैंक यू. कैसा चल रहा है आपके लिए लॉकडाउन? आप तो ऑफिस पहुंच चुकी हैं, आपका बैकग्राउंड बता रहा है. जी, बहुत डांट पड़ रही है. अपनी जो कॉलीग्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब कह रहे हैं क्यों आप रिस्क ले रही हैं. मैंने कहा मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, ऑफिस खाली है. There is nobody here. There is social distancing. I drive my own car, so I have not come into contact with anybody. I'm not going into any shops. So I just find this place so cheerful that once a week at least I try and come in and work out of here. Otherwise, I'm working from home. Wonderful. May you stay happy and safe during these times. We need more and more people like you and they're in action. COVID times, post-COVID times. Let's get going. हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं creativity और collaboration के हवाले से कर रहे हैं. आप सब हमें join कर सकते हैं अपने questions and through comments and you'll also be able to speak जहाँ पर live towards the end of the conversation. हम किस हवाले से बात करेंगे? हम बात करेंगे जहाँ is called the big bird. बहुत सारे नौजवान हैं जो कि बिग बर्ड बुलाते हैं. बड़े क्रिएटिव टाइटल्स हैं. ये लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है बल्कि काम करने का अंदाज भी. कैसे ये काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है. हमने बहुत सुना है कि स्कूल्स क्रिएटिविटी मार देते हैं. Nest.io जो है वो बेशुमार नौजवानों के साथ और टीनेजर्स के साथ भी कुछ कैंप्स रन करता है. क्या आपको ये नजर आता है कि जो स्कूल प्रोडक्ट है उसमें क्रिएटिविटी की कमी है? कुछ मैंने बहुत ऐसे नौजवानों को भी देखा है, a couple of groups who are homeschooled and yet they're wonderful entrepreneurs. So there's a good difference there. We'll speak about creatives कैसे चीज़ों को मुख्तलिफ देखते हैं because जहाँ meet so many of them and so many perspectives. She has such an enriched life full of ideas. क्या creativity ज़रूरी है entrepreneurs के लिए? पाकिस्तान में ख़ास तौर पे business बनता competition पे है तो collaboration कहाँ से लफ्ज़ निकल के आ गया है? पाकिस्तान collaboration लैक करता है या नहीं? हम जानेंगे. कोलैबोरेशन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कहाँ मुमकिन है. कोलैबोरेशन माइंडसेट स्टार्टअप्स के लिए कैसे काम करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप और मैं कोलैबोरेटिव कैसे हो सकते हैं? ये कुछ सवालात हैं और ऑफ कोर्स ये मजीद फ्यूल होंगे आपके सवालात के साथ. थैंक यू वेरी मच आपा वंस अगेन. लेट्स गेट गोइंग. ये बिग बर्ड का टाइटल क्या है? And is it that you work differently? Tell us a little more about it. So, Umair, when over 5 years ago, now about 5.5 years ago, when we decided to open up this space, we tried to find a nice name for the space. So, मैंने Facebook पे डाल दिया कि भाई इसको हम क्या, it's going to be a community space, so might as well ask the community what they think it should be called. And almost 500 suggestions from people as to what it should be called. And then, of course, we had our own brainstorming here as well. And then we came up with the name the Nest.io. And when this space was called the Nest.io, the founder and CEO
is called the big bird because this is a nest, right? Yeah, wonderful. So a lot of people thought that this is, especially the more conservative management types who said, "Ye kya hai?" Matlab, people will not take you seriously if you're called the big bird. You should be called, managing director, president, CEO. Ye kya cheez hai? But I thought, considering the kind of culture we wanted to bring into the space, the kind of people who were going to come in, it was something that would start the conversation. Ki ye big bird kya cheez hoti hai? I even have a big bird in the office that a friend of mine gave me. So, you should learn not to take yourself too seriously. अगर आप अपने को बहुत seriously लेंगे तो life can be very boring. It can be. And while you mentioned that you have the big bird, I must tell you that Jahan has a lot of very, very cool things and she keeps displaying them and makes us all jealous. So please, can you also talk about how do you work differently? And you've been part of, the way you have worked over the decades that I've seen, last decade that I've seen is creative. And you said that traditional उससे ज़रा आप मुख्तलिफ अंदाज में काम करना prefer करती हैं. What is that difference? So I believe and I've always believed कि इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसको कुछ मिले, खुशी मिले, passion हो, joy हो, not only for yourself but all the people who work with you. So I've always tried to create a space where that can happen. We work differently. Everything is through consensus. So my ideas can be shot down. The ideas of our creative team can be shot down by people who have no idea what creativity means. Because it's all, let's do this together. And sometimes our founders, our startups also shoot down some of the things that we want to do. They say, no, this is very boring. We'd rather you don't hold this kind of session. So that feedback loop is constant because we want to do things that are needed, not things that we feel are required. थोड़ा एक शुरू में तो आपका एक स्ट्रक्चर होता है मगर उसके बाद you need to continuously change and transform. And that, I think that loop of transformation is extremely important if you're going to keep yourself, energized, if you're going to keep yourself vital. So, isliye, I think this is how we do things differently. And we bring in all sorts of people to make that happen. You've been here, you've run sessions. So we bring people because we know we don't have all the capabilities we require to do the things we want to do. And I've personally seen a lot of respect for the differences that you put together, the diversity that you bring in, and they get respected for what they're doing. बहुत अहम बात की है जो फीडबैक लूप वाली बात है बड़े इदारों में जो चलना शुरू होता है तो ये लूप कभी वापस आता ही नहीं है छोटे इदारों में और इस तरह की स्पेसेस में. Are you saying something? No, I'm not. No, I think now established organizations are scared, are afraid of making changes because they feel that they'll have to be made all the way from the bottom to the top. Whereas smaller organizations can pivot, can experiment, can try new things and see what works, what doesn't. And failure is not something that you should be afraid of. And that's what I think startups and organizations like mine believe. Whereas large organizations don't want to think of failure. It's like their reputation. What will happen if somebody thinks they failed? So that kind of, that being risk averse is not something that we in the startup space think about. Yeah. I must tell you, in some of my corporate trainings, this is the challenge now to teach that failure is good in an environment where the policy punishes failure. But the big point is that the big super tankers are scared of the speedboats, companies, economies. They say school skill creativity. वो रिसर्च है कि 2 क्लास में पूछो कितने क्रिएटिव तो 100% हाथ, 5th ग्रेड में पूछो तो आधे हाथ नीचे होते हैं और 10th grade तक कोई 1-2 हाथ ऊपर रह जाते हैं. Please tell us a little more, and because you've had different kind of youngsters coming from all walks of life, I would say, have you seen creativity stifled, especially because of education? So I've seen it for myself. एक स्कूल जिसका नाम मैं नहीं लूंगी, जो अच्छा खासा established बड़ा स्कूल है कराची में, वहाँ मैं गई. उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये कंप्यूटर की क्लास हो रही है, आप इसमें आके जरा, you're a well-known name, come and talk to the kids. So I went there, and there's this teacher who probably is very new to the area of computers, whereas the kids in the space probably all have computers at home, is trying to tell them this is a disk drive, this is a monitor,
And then she touched the mouse, and one of the kids jumped up and down and said, I know what that is. I know what that is. And she said, sit down, keep quiet. I will tell you what it is. So, I mean, yes, I think schools really do kill creativity. The teachers should not be afraid that the student might know more than they do. It's, Wow. it's sort of, it's also a collaboration in learning. So there are things that the teachers, there are loads of things that the teachers can teach the kids. मगर बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे आजकल खुद सीख रहे हैं, जो मैं या टीचर्स जो हैं उनको इतना नहीं मालूम है. It's all bookish knowledge that we probably know, and these kids are doing it and they are creating things using those computers. तो उससे डरना या ये सोचना कि इस बच्चे को मुझसे ज्यादा मालूम है kills the motivation in the child and kills the creativity. So मैं schools से बहुत घबराती हूँ इसलिए. I think schools are also beginning to change, where younger teachers are coming in, teachers with training are coming in, and they're being able to make the changes that are required. So I won't, say they're all bad, but I think that they do kill creativity. This space is not a school. So यहाँ जो बच्चे आते हैं, they come to a space where there is facilitation, where there is collaborative learning, where there is the ability to find themselves and do things that they want to do. So that's how it's different from a school environment. Wonderful. और मैं ये नहीं देखा कि वहाँ किसी से जाके जवाब ले रहे हैं, बल्कि कलेक्टिवली, और ये स्पिरिट होना कि हम में से किसी को पता नहीं है लेकिन हम मिलके पहुंच जाएंगे जवाब तक. उसके लिए माहौल चाहिए जो कि फैसिलिटेशन रखता है, जो कि फ्रीडम रखता है, पीयर लर्निंग रखता है. बहुत अहम बात है कि उस्ताद शागिर्दों से ये घबराए नहीं कि शागिर्द ज्यादा जानते हैं, बल्कि उसको साथ में ला के कहेंगे तुम बताओ, हाँ बेटा, if you know about it, why don't you share it with your class, with your friends? I mean, there are ways to handle this. What is coming to my mind, some teachers would actually, make you, and I've had this moment many a time, when they give you the marker and say, beta, aap aake khade ho jaye. And even that's sarcastically, right? Not to motivate you. Yeah, not at all. And when you step out, the kids really come and ask you, and you're like, wow. Okay, wonderful. You've hung out with so many creative people around you, and you yourself are one. And tech creative is a great combination. How do you see creatives seeing things differently? They say the creatives are more sensitive, the world, the challenges appear differently. What is it like? So they are different, and I admire them. I'm inspired by people who are creative. And you can be creative in many ways. So it can be, music or graphic design, or it could be anything that you're creating, entrepreneurs, everything. What I've seen that is different in people who are creative is that they have a vision. They are open to different ideas. If they look out the window, and I've seen this happen at the Nest as well, they look out the window and the sky looks a little bit different. And they'll sit there and just look at the sky, and you'll think, what the hell are they doing? And they say, don't you notice the color variations and how beautiful this looks? And then they'll go up to the roof to take pictures of it and, discuss it. And you get sort of pulled into that because it is beautiful. So they have a vision. They observe everything. They also observe people, and I see a lot of them taking notes. So sometimes ideas come into their heads and they note it down. Not probably for something that they're doing just then, but maybe something that they will do sometime in the future. So they take notes of people. They look at the world like they're looking at it with the eyes of a child. So everything is different for them. So I'm really, I'm totally admire. I totally admire what they do. It's like they're in love with the world. But there is one thing, they are harder on themselves than they are on anyone else. So they create something, they'll take a lot of time over it, and they will think it's beautiful. And within a few hours, they'll hate it and they'll trash it and start all over again, back to the drawing board. So they're very, very tough on themselves. And one of the things that is difficult to do when you're working with creative people is that they don't like boundaries. So if you're in a business and you want to create something, they don't like boundaries. So you have to be, you have to be very careful that you're not going to step on their toes. And over time, you develop an understanding so that they know how to work with you and you know how to work with them. But you have to give them that room. And also,
there is no particular hour when you can be creative. So we are working 9 to 6. That doesn't mean that they're going to come up with this creative genius of an 11 idea. o'clock in the morning, the idea Those hours, they could wake up at 2 o'clock and they want to do something creative at 2 o'clock in the morning. And sometimes I get some ideas from the creative team at the Nest at 2 or 3 o'clock in the morning, and I say, what the hell are they doing at this time of the day, of the night? And obviously they've thought of something at that particular time and they want to share it right away. So, they are really different kinds of people. And also they need time to be alone. Because I think there are ideas, there are questions that they need to ask themselves, discoveries they need to make before they turn out that creative idea. And that's true for content writers, it's true for musicians, it's true for graphic designers, anybody who's in that creative space. So they're just amazing. I just have a lot of time for them. there are a few questions around this. Thank you, Japa. Wonderfully said. Creatives observe, see, लोगों को देखते हैं, एक चीज पे फंस जाते हैं, उस पे variations. So more insight there, and then no time for creative ideas to pop in. I'm reminded of what Elizabeth Gilbert said, that sometimes when it's about Tom Waits, that he was driving and he heard some music coming. He was a very dark musician. तो कोई धुन सुनाई दी, तो he wanted to put it down. जो आपने बात की ना notes वाली. But he was driving, so he just couldn't put it down. So he finally looked up in the sky and said, "Can't you see I'm driving right now? Can't you come at a more opportune moment? And hey, if this is the time you have to come, then go to Leonard Cohen, go to some other musician so that he can sing it, but I can't." So scribble करना, points लेना बहुत अच्छी बात है कि you don't know कि वो उस चीज से relate करता है, उस वक्त से relate करता है नहीं, but you can build upon that. अच्छा, we have a few questions यहाँ पर. Madhya wants to know, how can you maintain the discipline without any boundaries? Because creators want to work without boundaries. They want to work without boundaries, but they have their own discipline. Like they will put aside time, that this is the time that I think I work best. And that's the time that they will allot themselves. So it's not as if they don't have any boundaries. They just don't want somebody else to set boundaries for them. Because, you can't know when that creativity is going to emerge. So I think they have their own way of doing it. And if you work with them, it happens. Wonderful. Vajia wants to know how much a child should know and liberated use of the phone and computer. This one you've got to answer. Take some responsibility. Well, they shouldn't be in front of a screen 24 hours a day, that's for sure. But I think that the younger you expose them to a computer, I don't know about the phone as much, but to a computer, and now a phone is a computer, I guess, the more they'll be able to discover, because there is a lot of content out there. But yes, there should be some guidance depending on how young the child is. So I don't think, my own niece, she was 2 years old when she was exposed to the computer, and she found so many wonderful ways to play with the computer even at that time. So, I don't think there's any age. It depends on the child, how interested the child is. But remember, the computer, the telephone, which is now a computer, is something that's become a part of our lives. And if whatever the child does as part of their profession or their lives, it's going to be using this gadget, which may change over time. So exposing them, but yeah, there should be a balance. Like with anything, there should be a balance. And guidance, because there's a lot of content out there that they shouldn't be exposed to. So guidance by the parents, by the teachers is extremely important. अच्छा, कुछ गुजारिश है कि हम जरा उर्दू में गुफ्तगू करें. So हम बहुत अवेयर हो जाते हैं ना. क्रिएटिविटी एसेंशियल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्यों? और कुछ कहानियां सुनाएं आपके पास, अपने इर्द गिर्द इतने अच्छे क्रिएटिव एंटरप्राइजेस स्प्रिंग आउट किए हैं. क्रिएटिविटी इसलिए जरूरी है, आप सोचते नहीं है जब आप एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि इनको भी क्रिएटिव होना चाहिए, मगर इनको बहुत जरूरत है क्रिएटिविटी की, इसलिए कि इनके आइडियाज, इनके प्रोडक्ट्स, इनके बिजनेस मॉडल्स हर वक्त चेंज होते रहते हैं और पिवट इनको करना पड़ता है. तो इफ दे आर नॉट क्रिएटिव तो बहुत मुश्किल हो जाए इनके लिए. दे हैव टू थिंक क्रिएटिवली विथ एन ओपन माइंड. तो मेरे तो ख्याल है कि इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर दैट यू शुड बी
they come across things that we think, that are unthinkable. They come across problems जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम इनका हो सकता है. अब आप देखें कोविड के जमाने में बहुत से स्टार्टअप्स हैं या एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए, कोई चीज नहीं चले, काम नहीं हो सके. तो इफ दे आर नॉट क्रिएटिव तो सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? सोल्यूशन ढूंढने के लिए दिमाग को बिल्कुल ओपन और क्रिएटिव होना जरूरी है. तो दैट्स व्हाई चीजों का मिला के उनसे प्ले करना जरूरी है. वंडरफुल. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं. अब आप देखें, एक हमारा स्टार्टअप है, उसका नाम है मॉड्यूलस टेक. सो दे इनिशियली स्टार्टेड आउट 3 engineers फ्रॉम NED. दे स्टार्टेड आउट जब उन्होंने नेस्ट ज्वाइन किया टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फ्लैट पैक्ड हाउसिंग that could be set up in 3 hours. Wow. So that was a creative thing to start with, but they have pivoted over time because they've seen needs and they've tried to make sure that they meet those needs. तो अभी मैंने देखा था परसों फेसबुक पे कि उन्होंने डॉग हाउसेस बनाए हैं, न्यू लाइन ऑफ डॉग हाउसेस फॉर पीपल who want their dogs, stray dogs, to have a place where they can stay and where they are protected from the extremities of the weather. And they looked so nice. I was even tempted into getting a dog just because I wanted the dog house. So उन्होंने ऐसा किया है. फिर then they were looking at building houses up in the northern areas जहाँ पे accommodation नहीं है. So they were working with the government to do that. Of course, COVID happened, so that's on the back burner. They're also working with hospitals right now. So they're building COVID screening facilities, they're producing testing booths, and they're creating disinfection of packages for the e-commerce sector. So entrepreneur है ना, flat packed houses से कहाँ पहुँच गए? और फिर they're building toilets for rural areas, all sorts of things. तो इसके लिए creativity चाहिए होती है, और इसके लिए you need to be looking at what's going on around you and providing solutions that people need. इसी तरह अगर एक आप हमारे स्टार्टअप है जिनके बारे में सुना होगा आपने, Connect Here. They are working on solutions for people with hearing disabilities. And there are a lot of people in this country, about I think 10 million from what they told me, who have some form of hearing disabilities, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. तो इन्होंने क्या किया? Not only are they providing interpretation services so that these people can call banks and be able to talk to a banker to provide solutions. इन्होंने एक concert किया deaf लोगों के लिए at Habib University. Can you imagine? Concert for the deaf. हाँ, deaf लोगों के लिए क्यों concert किया है भाई? वो तो सुन नहीं सकते. But इन्होंने बहुत imaginatively किया. Strings जो band है, they were playing. और फिर इन्होंने लाइट्स के इस्तेमाल से, वाइब्रेशन के इस्तेमाल से, they had interpreters on the stage, वो लोग इंटरप्रेट कर रहे थे. You had to be there, Umair. मैं गई थी और मुझे You don't invite me to such places. But what a fascinating idea! Wow, concert for the deaf, strings playing and interpretation. I'd love to. I'd like to see how it happened. Then they had, उन्होंने ये भी किया कि थिएटर कंपटीशन किया for the deaf. They've been, जैसे elections का, the whole hearing disabled population doesn't know anything that's going on as far as the elections are concerned. They started interpreting कि जो भी चीज हो रही थी उसको वीडियो और साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने इंटरप्रेट करके सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया. अब उन्होंने कोलैबोरेशन किया है सेहत कहानी के साथ एंड नेटिव लर्निंग के साथ. ये दोनों स्टार्टअप्स हैं. नेटिव लर्निंग हमारा स्टार्टअप है, सेहत कहानी यू प्रॉब्ली नो वेरी वेल. इनके साथ मिल के टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर पीपल विद हियरिंग डिसेबिलिटीज. तो एंड दे क्रिएटिंग फन कंटेंट. ये जरूरी नहीं है अगर किसी का कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो, इफ दे हैव अ चैलेंज, कि उनके लिए सिर्फ सीरियस कंटेंट हो. तो अब मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये लोग बहुत फन ड्रामेटिक कंटेंट कर रहे हैं, जो सो दैट people with hearing disabilities also have something to look forward to. They have entertainment, they have things that they can aspire to do themselves. तो इस तरह के startups हैं. मैं तो I'm super proud of all of them. Wonderful. Great to know about them. And I was just thinking when you said this, कि
क्रिएटिविटी ज़रूरी है, अपनी महारत, अपनी मोहब्बत जिस आइडिया से है, उसको जब मार्केट से मिलाना होता है तो यू हैव टू एंड वंडरफुल एग्जाम्पल कि आप शुरू कहाँ से किए हैं और वो कितने लेवल्स पे यू कैन कंट्रीब्यूट। पिवटिंग के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस, थोड़ा सा कोलैबोरेशन पे आते हैं। बिजनेस तो बना कंपटीशन पे है, सो कोलैबोरेशन कैसे? और इस सदी में लव्स कोलैबोरेशन ही सुना जाता है। सो व्हाट इज, हाउ डू यू पुट द टू टुगेदर? देखिए, बिजनेस कंपटीशन तो होता है, बट कोलैबोरेशन से मे बी यू कैन capture a larger market by collaborating with someone who does something very different from you, और या फिर मगर उसमें कुछ एक चीज है जो आप मिलके करेंगे तो यू कैन एड्रेस अ बिगर मार्केट। तो जैसे कनेक्ट हियर ने सेहत कहानी के साथ किया, सेहत कहानी हैज एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर सेक्टर। कनेक्ट हियर domain is people with hearing disabilities. दोनों ने मिलकर जब किया तो they are providing services to two different, totally different segments and working together to do it. So I don't think there's any harm. In fact, it's an advantage. अगर आपको मिले कोई चीज, अब बहुत से small entrepreneurs हैं, micro entrepreneurs हैं, जिन्होंने अब दराज पे अपने products डालने शुरू कर दिए हैं, because they feel कि हम अकेले जो चीजें बेच रहे थे, now if we put it on Daraz has access to a much larger user base, so they can sell more. Daraz makes money, they make money. So I don't, अब फिर एक आपने सवाल शुरू में पूछा था कि how can government and private sector work? So what Baikia has done, I mean, Baikia's business totally stopped when COVID-19 happened. So they offered their riders and bikes to the government to deliver all the rations and the money and all of that. I mean, that was not possible for the government to arrange so quickly on their own. So private sector, public sector can work together, startups can work with each other. अब तो बड़ी businesses जो हैं वो भी पूछ रही हैं startups से कि how can you join us, make us more innovative, work with us. तो मेरे ख्याल में collaboration से कोई disadvantage नहीं होता. It just increases the size of your market. Increases the size of the pie. Do you think Pakistani? Yeah. Do you think Pakistanis lack collaboration? मैं बहुत सुना है कि पाकिस्तानी के लिए खड़े नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, हमारा इत्तेहाद का बहुत मसला है। मैं जब यहाँ आई थी ना मिड 90s में हांगकांग से, तो मेरी भी यही शिकायत थी, यार ये क्या बात है, मैं जहां भी मिलती हूँ और नेशनैलिटीज को, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। पाकिस्तानी समझते हैं कि एक दूसरे की मदद करने में उनकी जो है ना पाए वो छोटा हो जाएगा। बट आई थिंक ओवर टाइम थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज, एंड हमारे पाकिस्तानीज ने भी रियलाइज किया है कि भाई मिलके काम करो, देयर इज अ लॉट मोर। आई मीन द साइज ऑफ द पाई इज सो बिग, you don't need to be afraid that somebody else will take away your share. There is enough for all of us. तो मेरे ख्याल में अब मैंने देखा है कि काफी collaborations होने लगे, बट शुरू में हाँ मुझे भी ये शिकायत जरूर थी कि पाकिस्तानी क्यों collaborate नहीं करते। True that. You answered this in your last answer, but I'd like you to take a bit of time because you have seen so many sectors at the cross section of tech. So please help us understand this a little more, because government can't solve all the challenges. We know that has to happen with private sector. So I think government has a big role to play in facilitating, मगर execution में government को नहीं आना चाहिए। और ये tech sector की भी शिकायत हमेशा रही है कि आपने जो भी चीजें सेटअप कर दी, टैक्स के लिए आपने सेटअप कर दिया, नादरा सेटअप कर दिया, these are all things the private sector could have done very easily in collaboration with the government. तो उसमें टेक सेक्टर को ये होता है कि we don't get a chance to grow if the government sector comes and starts creating their own companies. Punjab IT board में भी यही हुआ, you know they employed the best of the software engineers from the Punjab market. तो उसकी वजह से software companies in Punjab were very upset. They said, "Okay, bhai, you know, give us a chance to grow, and we can do the job much better because we are private sector companies. We know how to do business. You know how to make policies." तो ये दोनों चीजें, and even in the case of policies, मेरा तो ख्याल है जब policies बनाएं तो आपको private sector को involve करके policies बनाने चाहिए. Whether it's civil society, whether it's the business sector, इसलिए कि आप बना किसके लिए रहे हैं? आप हमारे लिए बना रहे हैं ना, तो make sure that it is good for us and good for you.
अगर आप आइसोलेशन में बनाएंगे, you don't understand how business functions, you don't understand how civil society will be affected. तो मेरा तो हमेशा से ये हुआ है कि अगर आप बैठ के जरा डिस्कशन कर लें पहले, उसके बाद आप पॉलिसीज बनाएं. We understand policies are needed, but you need to work with the private sector. They are not your enemies. ये मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है. हमारे यहाँ हुकूमत को सरकार कहते हैं ना, तो सरकार तो ऊपर से आती है ना, हमेशा ऊपर से आती है. नहीं, मगर सरकार को हम बहुत मदद कर सकते हैं अगर वो हमें इजाजत दें. तो there are so many people, so many talented people in the private sector जो उनका काम आसान कर सकते हैं. ठीक है, कुछ सवालात हैं, बल्कि बहुत सारी प्यार भी है, सवालात भी है. Many of them are admiring your work. Shoaib says that he's endorsing that he's not seen a lot of help and collaboration in Dubai. Shoaib, hope that you see it differently. Hope that you find people who are more collaborative. There are definitely many people who are doing that. Danish says you're doing a remarkable job. Wonderful startup, social impact for your platform. You played a great role for the ecosystem. Somebody looked you up on Wikipedia and said she is the mother of all startups in Pakistan. I'm not that old. How could I be the mother of all these startups? Sana says amazing stories. Okay, let's take a few questions from these. So one is that why don't we see non-tech startups in Pakistani incubators? So there are non-tech startups in incubators. The Nest is something that we set up for tech tech startups to incubate them and accelerate them. तो ये हमने conscious decision की थी because I was part of the tech sector and this is what I wanted to do because I felt कि tech startups जो होंगे उनका scale होना ज़्यादा आसान होता है. So if we can support the growth of those startups, then perhaps we will see the economy taking, a leap that perhaps they could otherwise we would have taken years to do. Yeah. But है बहुत से startups हैं जो non-tech हैं. अब I don't know how you would define non-tech because आप चाहे groceries बेच रहे हो, आपको online आना है. Because अगर आपको अपनी market size बढ़ानी है, तो आपको ये करना होगा. आप education startup हैं, तब भी आपको learning अपनी online provide करनी है. आप जो भी कर रहे हैं, अब ये modular tech की मैंने बात की, they're an engineering startup. Because they're making flat packed housing using that sense of engineering that they have. तो बहुत से ऐसे हैं water के, solar के, बहुत से startups हैं जो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं. Sheops है, नादिया के बारे में तो आपने सुना होगा. She's created an immense platform where she's providing help to women who are working from home, starting businesses. They're not tech businesses. Tech का platform एक इस्तेमाल कर रही है वो to provide that facilitation that is required. But otherwise, all her community are non-tech. तो ऐसा नहीं है कि नहीं है non-tech. Tech के बारे में आप ज़्यादा सुनते हैं इसलिए कि exciting बहुत होते हैं. तो इसलिए मगर आप देखें जैसे जो आजकल राशन सप्लाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं that have pivoted to help the community. उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल non-tech startups हैं. But you said it, I think, when you said that, how do you define a tech organization? Future, every organization is a tech organization. It's a tech organization. Just like every organization is a sales organization, tech has become part of all the functions. It's a cross-cutting. अब आप जैसे दवाई बेच रहे हैं, दवाई.pk, is it a tech startup? Really? I mean, they're selling medicine and wellness products. All they're doing is using a platform, right? And they've created a big market for themselves. Healthcare startups, Sehat Kahani, is it a tech startup? You can call it that because they're using an app. मगर वो कर रहे हैं ना डॉक्टर्स को. तो मेरे ख्याल में it's very difficult. There's no line between tech and non-tech anymore. बिल्कुल. और ये बल्कि इनविटेशन भी है कि कोविड टाइम्स में अगर आपको ऑलरेडी डिजिटाइज नहीं किया तो हो जाए. और अपने बिजनेस को नॉन टेक ना समझें बल्कि टेक बना लें. It will help you. There's and we've heard this. A lot of people write about this. End up creating useless ventures. There's a lot that comes out in tech startups, which according to S88PK is useless. What do you say to that? So I don't think anything is useless. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं. अगर आपने कोशिश नहीं की होती तो फिर यूजलेस होता है. कुछ कोशिश करेंगे उसमें आप सीखेंगे. वो प्रोडक्ट शायद
वर्कबल ना हो, मगर आपने सीख लिया कि आप किस तरह बिजनेस मॉडल बनाएंगे, किस तरह आप कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, किस तरह आप इवैल्यूएट करेंगे अपने स्टार्टअप को वेदर इट विल वर्क और नॉट, ये सब चीजें सीख ली ना। अब ठीक है वो प्रोडक्ट नहीं काम किया, कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यूजलेस कोई चीज नहीं होती है। आई थिंक देयर इज सो मच लर्निंग ईच टाइम you try to do something for yourself. So I admire entrepreneurs because they're taking a risk. They know that it may not work, but they want to take that risk and try it out. और मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो है ना वो बहुत ही courageous होते हैं। वाह, आप सीख गए, ये सबसे बड़ा learning है, and that is there to stay. Aditya wants to know, why do Pakistani startups try to create too much social impact without being commercially viable? For example, in edtech, they don't have to do for basic K-12 education, but instead try to go after something complex. देखें Aditya, so you don't have to have a product जो complex हो, you have to have a product that sells. अब आजकल जो edtech startups हैं who are creating a big revenue base for themselves are those that are providing learning online, किसी तरह की भी learning. तो इट कुड बी K-12। हमारा एक इस्लामाबाद में एक स्टार्टअप है, हमारा नहीं है बट ही इज पार्ट ऑफ द टेक सेक्टर, नॉलेज प्लेटफॉर्म। इनका ये सारे एक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा गैंग है बहुत बड़ा, और इस गैंग के करीब आए उन्होंने अभी फंडिंग रेस की है उन्होंने। यू नो दे क्रिएटिंग गुड ग्रेट कंटेंट दैट इज एनेबलिंग पीपल टू लर्न in an exciting way. तो मेरे ख्याल में commercial कोई product नहीं होता है. You have to find a problem, find a solution to that problem, and if it is a simple solution, it will sell better than if it is a very complex solution. लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो लोग क्यों खरीदेंगे भाई? Complex की market बहुत छोटी होती है और simple की market बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी होती है। वाह। Fintechs, the same time, the payment issues like credit cards, PayPal, hampering retail startups. What's the update on that? Because some fintechs have started coming out, and a lot of payment gateways are established. But let's ask it from Jehan. So a lot of us have been talking about this, and even last night I was on a panel with Monis Rahman, and he was telling us that Finja, जो एक startup है in which he's one of the co-founders, उनको स्टेट बैंक का अप्रूवल मिलने में काफी देर लग रही थी, बट नाउ द स्टेट बैंक हैज स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग पीपल अ लॉट मोर इजीली बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. तो इजी पैसा तो था ही, फिंजा है, there are a lot of fintech solutions that are coming out. हमारे यहाँ भी एक है शायद सेफ पे के नाम से. there's one that's come out of of Cybernet, that group. There's another product that's come out of Lahore. बहुत से अब fintech players are coming up, and the ones that are going to think about the customer and make it seamless for them, वो हो जाएंगे. अब online से आप दूर नहीं जा सकते, digital हो गए हैं. अब तो बड़ी बड़ी businesses who had never thought that they would come online have come online. तो अब वापस जाना बहुत मुश्किल होगा, and at least for the next 12 months to 24 months चीजें improve ही होंगी. और उसके बाद once you've gone there, going back is very difficult. तो ऑनलाइन पेमेंट, और लेकिन अगर आप वहीं रह गए हैं तो जल्दी से भागना शुरू कर दें, क्योंकि कोई आ नहीं रहा वापस अगर आप वहीं खड़े हुए रह गए। ये बहुत अहम है, और ये बिजनेसेस को बल्कि अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि वो चीजें जो रूटीन में हो रही थी वो शेकअप हो गया है, एंड इट्स टाइम के जो एक्सेस है, जो चीज टेक्नोलॉजी से हो सकती है, लॉट ऑफ ह्यूमन जॉब्स आर कैन बी डन बाय एल्गोरिथम्स, लॉट ऑफ work the way it's laid out, and big companies are changing ways. So बहुत अहम है इस change के साथ move करना, and that is the answer, that is the way forward. Sami wants to know, and जहाँ पर I'll include this especially, intermediate students, they have time, what would you recommend? So I would recommend for you what I have recommended for myself. जब शुरू के दिन थे ना, जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी, बिकॉज आई एम यूज्ड टू अ सोशल एनवायरनमेंट, लोग हों, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग. तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने साथ क्या करूं. फिर मैंने सोचा, आई गॉट अप, फर्स्ट आई डिसिप्लिन माई सेल्फ
कि मैं सुबह उठूंगी, और ये कल जोहेर खालिक भी कह रहे थे उस पैनल पे कि प्रिटेंड दैट यू आर गोइंग टू वर्क और गोइंग टू स्कूल इन योर केस। सुबह उठें, आप तैयार हो, नहाएं धोएं, उसके बाद आप अपना प्लान करें डे कि क्या करना है, किस वक्त एक्सरसाइज करनी है, किस वक्त सोना है, किस वक्त काम करना है, एंड लर्न समथिंग न्यू। तो मैंने भी एक मास्टर क्लास ज्वाइन कर ली है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न, और वक्त नहीं मिलता है। स्टूडेंट से मैं अक्सर ये सुनती हूँ और प्रोफेशनल से भी, कुछ पूछो कि ये तुमने किया है कभी, नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। तो अब वक्त मिल गया है ना, तो कोई नई चीज सीखें, कुछ अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, कुछ कम्युनिकेट करें लोगों से, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बातचीत करें, अपने ब्रॉडन करें होराइजन्स को, बिकॉज ये आगे चल के आपको इसका फायदा होगा। वंडरफुल एडवाइस, अपने लिए भी यही है और आपके लिए भी यही है कि इस वक्त बिल्कुल को बिल्कुल इस्तेमाल करें। वेरी गुड एडवाइस। सुबह उठें और जरा तैयार श्यार होके गेट रेडी और फिर अपना प्लान जरूर बनाएं। वंडरफुल, यू कैन जॉइन। नहीं, अगर आप अपने पजामाज में बैठेंगे ना तो आपको यही महसूस होगा कि यार बिस्तर नजर आ रहा है, जाके वहां सो जाते हैं फिर। बिल्कुल, बेटर टू डू दिस। कुछ लोग बिस्तर पे भी बैठ के काम करते हैं ना, तो इट्स अ बैड आइडिया इन दिस टाइम। लॉट पीपल आर रिकमेंडिंग के जगह बनाए अपनी। थैंक यू जापा, दिस वेरी चार्मिंग द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड इट, एंड वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड लोडेड कन्वर्सेशन। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने सवालात के साथ। हियर इज द लाइव लिंक, इट्स आल्सो इन द कमेंट्स, एंड यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। मीनवाइल आई विल आस्क जापा, हाउ डू यू सजेस्ट वी बी मोर क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव? How? Just open up your minds. Look around you. There are so many people around you doing different kinds of things. Reach out to them. हम लोग भी अब आजकल, कभी पहले शायद ना सोचा हो, because people become so engrossed in what they're doing कि वो ये सोचते नहीं कि दूसरा आदमी कुछ कर रहा है, maybe it's something we can do together. तो मेरी टीम और मैं, हमने भी reach out करना शुरू किया है कि let's do this together, we'll create a greater impact. तो मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन में दोनों को फायदा होता है। कुछ कॉन्वर्सेशंस होते हैं जिससे आदमी सीखता है, और आगे चल के पोस्ट कोविड वही जो आपकी लर्निंग होगी, वही जो कोलैबोरेशंस और दोस्तियां आपकी हो जाएंगी, वो आगे चल के भी आपके काम आएंगी। सो आई थिंक द ओनली वे इज टू कीप एन ओपन माइंड, रीच आउट, पीपल आर विलिंग टू हेल्प। आप जब तक रीच आउट नहीं करेंगे, जब तक, मगर ये ना करें, जैसे कल भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आई हैव एन आइडिया, अब आप मुझे बताएं कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। इतना आसान नहीं होता है यार। पैसे हाँ जरूरी है, मगर उस आइडिया को आप थोड़ा सा काम तो करें ना। यू शुड हैव स्किन इन द गेम। आप थोड़ा काम करें, उसको प्रूव करें, कुछ लोगों को वैलिडेशन के लिए कुछ लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, फिर आप जाएं किसी के पास कि ठीक है मैंने इतना तो कर लिया है खुद, अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो फिर शायद पैसे मिल जाएं। मगर ऐसे नहीं होगा कि आई हैव एन आइडिया बट एंड आई थिंक इट्स $1 billion आइडिया, आप मुझे पैसे दे दें, नहीं देगा कोई। True that. मेरे ख्याल में ये आमना दुरानी जो कह रही है इसका जवाब बिल्कुल रेलेवेंट मैंने लगा दिया कि आपने, आपको जवाब मिल गया है कि हैव योर स्किन इन द गेम। थोड़ा टेस्ट करें, उसको ट्राई करें, जरूर लुकअप करें। बहुत सारे और लोगों ने भी चीजें ट्राई की होती है। somebody is saying if you don't have a software background, would you like to comment on this? People have ideas, but yeah, you don't have to have a software background. We've had people, हमारे यहाँ क्रिएटिव टीम्स आई हैं। एक टीम है यार के नाम से, उनका आपने प्रोडक्ट देखा होगा। they are creative, they can draw, illustrate the color, the dynamism of their products. तो जरूरी नहीं है, you have to create something जिसकी किसी को जरूरत हो। अब जैसे एक है हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है, उसका नाम है माई वाटर। तो व्हाट दे डूइंग इज कि जो पानी आपके नल से आता है, उन्होंने it's clean and you can drink it. You don't need to buy distilled water and you don't have to buy mineral water, right? तो आपको आइडिया सोचना है कि क्या है ये आइडिया, और कोई ये खरीदेगा, ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये इसकी जरूरत है किसी को। आप 100 लोगों से बात कर लें और उससे एस्टिमेट कर लें कि अच्छा कितने पैसे देंगे अगर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व। इज इट रियली अ प्रॉब्लम? 100 लोग कौन हो ये भी बताएं। कोई भी हो, मगर अपने अम्मा अब्बा भाई बहन से ना पूछें और पक्के दोस्त से ना पूछें, इसलिए कि वो तो आपका दिल रखने के लिए कह देंगे कि हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा आइडिया है। आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको सच बताएं, और इसका मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, वो बस आपका दिल रख रहे हैं।
मगर आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट वो खरीदेंगे या नहीं। तो आप जब 100 लोगों से बात करेंगे, कहीं भी चले जाएं, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो बहुत आसान है, आप 100 ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको आप ज्यादा जानते ना हो, उनसे पूछेंगे मैं ये बना रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है आपके लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो ये मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, वुड यू बाय इट, हाउ मच वुड यू बाय इट फॉर। इससे आपको थोड़ा एक असेसमेंट मिल जाता है मार्केट साइज का। वंडरफुल। और कोई चीज होती है जो हमें रोकती है अपने आइडियाज को इस तरह वैलिडेट करने में, बहुत जरूरी है नहीं कहते कि ये बिल्कुल फजूल आइडिया है। मैं भी डरती थी बहुत शुरू में जिसके पास जाने में कि अगर उसने कह दिया फजूल आइडिया है तो फिर तो मेरा दिल टूट जाएगा। भाई दिल टूट जाएगा मगर पैसे नहीं जाया होंगे, टाइम नहीं जाया होगा। लेकिन ये तो फिर भी कॉन्शियस दिमाग कह रहा है ना कि ना पूछो दिल टूट जाएगा, या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स वी आर जस्ट डूइंग इट एंड वी डोंट इवन नो इट। उमर हमारे साथ मोस्टली होते हैं। उमर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। व्हाट्स योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम एंड रमजान करीम मैम। वालेकुम अस्सलाम, रमजान करीम आपको भी। ऐसा I, गुजर I had just one question. जी। One question that a lot of startups जो होते हैं क्रिएटिविटी करेंगे, ये करेंगे, but down the line ये sustainability to sustain themselves, they compromise on that creativity and the quality, they reduce the quality also. So how we can manage that relationship between sustainability and creativity when we are growing as a startup and as a company or down the line, because sometimes they both come in conflict with each other as a conflicting interest. You want to sustain the market and profitability and all these things, but you are sacrificing the creativity. Losing out on creativity. Thank you, Umar. Question. देखें, मेरे ख्याल में अगर आप फाउंडर हैं तो हाँ, कभी डेस्परेट सिचुएशन आ जाता है जब आप सोचते हैं कि भाई इसमें वक्त बहुत लग रहा है, टाइम लग रहा है क्रिएटिविटी के लिए, पैसे ज्यादा लग रहे हैं क्रिएट करने के लिए, मे बी एक सस्ता सोल्यूशन देके टेम्परेरली मैं अपना बिजनेस संभाल लूं, मगर दैट्स अ बैड आइडिया। इसलिए कि एक बार आप उस रोड पे चले गए तो फिर आप वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा कि ये पैसे बन रहे हैं, चलो क्वालिटी का कोई बात नहीं। तो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्टार्टअप तो बेहतर यही होगा कि आप उस पर फोकस करें। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन में। इट्स द क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी दैट्स गोइंग टू गेट यू देयर। आप शॉर्ट टर्म में तो सस्ता कोई सोल्यूशन बना के बेच देंगे, मगर लॉन्ग टर्म में आपकी रेपुटेशन जो है ना वो फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप। Thank you, Umar. Thank you, Jahapa. Do you take equity at Nest.io, or how does Nest make money to survive? So Nest from the very beginning हमने ये तय किया था, बल्कि मैंने ये तय किया था कि हम इक्विटी नहीं लेंगे, और इसकी एक वजह थी उमर, एंड आई थिंक यू विल एग्री, कि जब लोग शुरू में आते हैं आपके पास और वो कहते हैं कि हम यहाँ इंक्यूबेट होंगे, हमारे यहाँ सस्पिशन बहुत है यंगस्टर्स में, खासतौर पे डिस्ट्रस्ट ऑफ एनीबडी ओल्डर देन देम एंड एनीबडी, यू नो, कि आप हमारे, अरे मेरे टैलेंट से आप पैसा बनाना चाह रही हैं, ये वाली बात जरूर होती। तो लोगों ने कहा भाई ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, आपको इक्विटी लेनी चाहिए। मैंने कहा देखें, दीज आर स्टार्टअप्स, अभी शुरू कर रहे हैं, आई डोंट वांट इक्विटी, लेट देम कम। और उसमें भी लोग सस्पिशियस हुए, वो आके उन्होंने कहा अच्छा आप हमें स्पेस देंगी फ्री में, आप हमें सिखाएंगी, आप हमें कनेक्ट करेंगी लोगों से, तो आप व्हाट्स इन इट फॉर यू, मतलब ये भी why are you doing this, what's in कौन it है ये? मैंने कहा भाई what's in it for me, the pleasure of seeing you grow and flourish, उससे मुझे खुशी होगी। तो मुझे बहुत टेढ़ी आंख से लोगों ने देखा कि नहीं, you know, she's hiding something, but over time these founders have found that I was telling the truth, कि मैं ये चाहती थी as a team we wanted to make sure कि हम facilitate करें। पैसे हमें अल्लाह का शुक्र है मिल गए थे शुरू में, we sold the idea and thanks to Badr Khushnuz who introduced us to the Google team who was here, Mary Grove who was heading the team at that time, वो Mountain View से आई हुई थी, बदर ने हमें कनेक्ट कर दिया। I sold the idea to her कि ये करना चाहिए और इसकी ज़रूरत है। बदर supported us कि हाँ ये ठीक कह रही हैं, कराची में कोई ऐसी स्पेस नहीं है। तो 50% पैसे जो हमें ज़रूरत थे पहले 3 साल के लिए वो गूगल ने दे दिए। उसके बाद सैमसंग ने हमें पैसे दिए, इसलिए कि
उन्होंने कहा कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर क्या करेगा. गूगल को तो समझ में आ रहा था बिकॉज दे हैड सपोर्टेड सिमिलर इनिशिएटिव्स पैलेस्टाइन में, मुख्तलिफ मुल्कों में. मगर सैमसंग ने कहा अगर गूगल कर रहा है तो कोई वजह तो होगी जरूर, तो हम भी दे देते हैं आपको पैसे. तो द सैमसंग टीम वाज ग्रेट. दे गेव अस द मनी and they gave us the support. They gave us even Samsung phones and tablets जो बच्चों को टेस्ट करने के लिए भी जरूरत थी. Google phones तो थे, Apple के हमने खरीदे खुद, इसलिए कि Apple की पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं थी. उसके बाद फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें कुछ पैसे दिए. They had an entrepreneurship grant. तो ये सब मिला के हमारे पास पैसे इतने हो गए थे कि till today we have been able to sustain ourselves without actually making any significant amount of money. हम बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं, मगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो करते हैं उससे पैसे लेते हैं, इसलिए कि they can afford it. तो उनको सिखाना कि how to be innovative, उनको सिखाना how to go about creating the kind of culture that they need within their organizations, उनके लिए करते हैं. और कुछ सेशंस हम करते हैं जिसमें हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी लेते हैं, मगर वैसे इंक्यूबेटीज से, स्टार्टअप फाउंडर्स से हमने आज तक तो नहीं लिए हैं. वी मे हैव टू चेंज पॉलिसी और चेंज द बिजनेस मॉडल, इसलिए कि आप पैसे इतने आसानी से मिलेंगे नहीं आगे चल के. तो ये देखना पड़ेगा, हमें भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, पिवट करना होगा, मे बी फाइंड न्यू पार्टनर्स, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू चार्ज द स्टार्टअप फाउंडर्स. और एक वजह है इसकी, जो बच्चे बच्चियां अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके पास दे आर ऑलरेडी गिविंग अप समथिंग टू स्पेंड 4 to 5 to 6 months here. जॉब नहीं ले रहे हैं ना, ग्रेजुएट करके यूनिवर्सिटी से हम निकल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी वो है. तो अब उनसे मैं कहूँ कि नहीं आप मुझे पैसे भी दें यहाँ पे रहने के, they won't be able to afford it. So the most talented, the brightest lot would not be able to afford to be in a space like this. और कोई भी चल के आता है कहता है ओहो ऐसा लगता है हम सैन फ्रांसिस्को में हैं. So I want that feel. Within Pakistan, there is no reason we cannot provide nice, colorful, open spaces जहाँ पे entrepreneurs एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करें, सीखें और क्रिएट करें. तो इसलिए नहीं लेते. Long answer to a short question. Thank you for that. Thank you for that. Sheroz is talking about बड़ी campaigning चली है, जो e-learning शुरू हुई भी. सारी साइटें खुल के साफ हमाम में आ गई हैं, कौन क्या नहीं करना चाहता और कौन सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं पढ़ेगा. आप बताएं जहाँ पर, what's your advice? What does he want to know? But students are facing hurdles because of shortage of resources. I think there's generally a mindset हमारा education का. Would you like to comment on learning and learning digitally? So what I have heard is universities remote learning provide कर रही हैं, and what people are doing is कि वो सुबह उठ के वो on तो कर देते हैं, अपनी attendance लगा के उसके बाद जाके सो जाते हैं. तो इसमें तो learning नहीं होने वाली है. और ये हो भी रहा होगा, I am sure of it. मेरे ख्याल में उनसे कहें कि आप वीडियो ऑन करके लर्न करें. मगर उसके अलावा सीरियसली अगर क्वालिटी ऑफ लर्निंग का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कुछ यूनिवर्सिटी स्कूल्स बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं कर रहे हैं. अब जो है आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए कि चाहे वो MIT हो, स्टैनफोर्ड हो, सब ने अपनी सब लर्निंग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है. तो कोई वजह नहीं है कि आप वहां जाके यूजिंग द इंटरनेट एक्सेस करें वो कंटेंट और उसके थ्रू लर्न करें, एक दूसरे से लर्न करें. अब तो इवन विद इन पाकिस्तान STEAM के एरिया में लर्निंग यूजिंग robotics, using any kind of ICT products, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है. तो लर्निंग एंड मेकिंग लर्निंग एक्साइटिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. और आजकल तो हम वैसे ही फंसे हुए घर पे, तो जस्ट गो ऑनलाइन, बट डिसिप्लिन योरसेल्फ कि इस वक्त से इस वक्त तक मैं लर्निंग करूं. अच्छा वो बीच में बोर हो जाए, स्टॉप इट. मैं मास्टर क्लास जो कर रही हूँ, आई गेट बोर्ड, वो सिखा रहे हैं तो मैं बीच में रोक के जाके थोड़ा चल फिर के वापस आके फिर देन आई स्टार्ट अगेन. तो इस तरह करें. मेक श्योर दैट whatever you are learning, you're being able to absorb. अगर absorb नहीं कर रहे हैं तो वो लगा हुआ है और आप सुन रहे हैं half consciously, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा.
Wonderful. Do you, when you're looking at startups, the pipeline, do you have a bias, and then how do you manage that? Yes, we have a bias. The only bias is that you must be committed to what you're trying to do. You must have the capability of doing it. आप कह रहे हैं कि मैं जहाज बनाऊंगा, मगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि जहाज किस तरह बनता है, तो then we would definitely not want you to be part of the incubation cycle. But आप committed हो, passionate हो, idea seems feasible and you have put some time into it. अगर आपने यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट किया है तो maybe it's your final year project, but it is something that is commercially viable. तो उस पे आपने काम किया हो, उससे कुछ आपको learnings हुई हो. That's the only bias we have, no other bias. And we give a little bit more preference to women. That's it. That's become very ख़वातीन सुने, लड़कियां खास सुने. ये ना कहिएगा फिर कि आप लड़की थी और आपके लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरे वक्तों के अंदर पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी हुई थी. पूरी दुनिया नहीं, लेकिन बढ़ती दुनिया. Can you tell or share or your view on how to transform traditional education systems to digital? Don't just scan the pages of the books and put them online. It's not going to work. All that content has to be recreated, which means कि अगर साइंस बुक है तो उसके एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस या एनिमेशन होने चाहिए. कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो क्लिक करके आगे उससे कोई भी एसोसिएटेड कंटेंट हो, उससे लिंक हो सके. तो यू एक्चुअली हैव टू रिक्रिएट दैट कंटेंट, कीपिंग इन माइंड कि डिजिटल पे इस तरह काम होता है. तो यू हैव टू इन्वॉल्व पीपल who've done it before. You have to involve people who understand technology, and of course you need the domain experts, the educators, the people who understand the material. तो ये भी collaboration का खेल है. Cool. दो सवाल हैं very quickly. एक तो ये है पाकिस्तान कब पहुंचेगा इंडोनेशियन इकोसिस्टम? मैं तो नहीं जानता, अगर आप जानती हैं प्लीज रिस्पॉन्ड. So पाकिस्तान जब ही पहुंचेगा जब हम डिजिटल हो जाएंगे. इंडोनेशिया में इसलिए वो जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं और उनको ग्रोथ इतनी जल्दी मिली है is because they had so many digital users willing to adopt the products that they were creating. And there's no reason कि पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ नहीं पहुंच सकते. अब तो आप देखें कि हमारी डिजिटल यूजर बेस बढ़ रही है. जैसे जैसे बढ़ रही है, आप प्लीज think of that product as something you're buying. ये ना कहें कि फ्री में दे दें. चाहे आप उसके लिए 100 रुपए दें, आप अगर बाहर जाके एक पैटीज भी खरीदते हैं ना, उसमें भी तो पैसे देते हैं ना. This is something that is going to either entertain you or going to solve a problem for you. किसी ने वक्त लगाया है, टैलेंट लगाई है to create this product. आप जब उसके लिए पे करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे स्टार्टअप्स ग्रो भी करेंगे और वो स्केल भी करेंगे. And there's no reason we can't get there. And अब तो इन्वेस्टर्स भी आने शुरू हो गए हैं, लोकल भी इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के भी इन्वेस्टर्स हैं. तो and I think they see the value of the startup ecosystem. तो मैं तो fingers crossed, I have great hopes for the Pakistan startup ecosystem. Wonderful. Ayaz, let's take this as the last one. We are in the 59th minute. Thank you, all of you. Thank you, Japa. This has been very enlightening. Lots of learning. मैं भी बड़ा क्रैश किया, जैसे आपने शुरू में कहा था. फिर क्वारंटीन सीरीज ने मुझे उठा दिया, क्योंकि मैं सारे सवालात अपने लेके लोगों के पास जा रहा हूँ. And it's helping me. It's helping so many people. Please, creativity in digital marketing as the last one. It's I know you have to run. So creativity in digital marketing, make sure that things are, first of all, they are created in such a way that they will attract the user, because there's so much content on digital media, right? So you must make sure कि किसी वजह से वो आपका content देखें, and that it is in snippets. जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में लिख के कि ये आप पढ़ लें, कोई नहीं पढ़ता. तो make sure that it is something that is easily accessible. It is something that is in small bits, और उसकी वजह से कोई फिर क्लिक करेगा कि अच्छा आगे जाके देखते हैं कि क्या करना चाहिए. तो मेरे ख्याल में that's the success, and make sure you know what you're talking about. अगर मैं आज ब्रिक्स के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं मालूम है ब्रिक्स के बारे में कुछ, तो
मैं content create करना शुरू करूँ, most of the users will know that she's a fraud. She doesn't know anything about bricks. ये खामा में digitally मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं. So I think know your product before you create the digital content, and when creating it, make sure that it's interesting and it's in small bits. बहुत जरूरी हो गया है अब, स्मॉल बिट्स में होना बहुत जरूरी हो गया है, इंटरेस्टिंग अटेंशन स्पैन जो है ना वो लोगों का बहुत कम से कम होता जा रहा है, तो आप जितने स्मॉल बिट्स में अट्रैक्टिव तरीके से पेश करेंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि somebody will then click and say okay, let me see how much it costs, or let me see what more they have to say. True that. We're having a chat day before के लाइव सेशंस में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, बहुत कुछ लोगों का ये चैलेंज, तो पता ही चला कि वो जो उनके जो लोग हैं वो खुद भी लाइव सेशंस कर रहे हैं. So everybody is throwing out content and you've got to be interesting. This has been lovely. मगर शिकायत अभी तक शिकायत ये थी there is not enough content out there. Yes. शिकायत ये आने वाली there is too much content, please stop talking. अब हम 5 साल तक इसको सॉर्ट करेंगे ना. इसको डब्बों में डालेंगे, ये भी एक काम है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्रिएट करें, क्यूरेट करें. I think the machine learning algorithms are also probably confused by now. इसलिए वो ट्रेंड ही बिल्कुल बदल गए. If we were in a world where the machines would really be guiding how we live and what treatment we know, this would probably be a time where machines would shut us down and say you're really going through a tough phase. Thank you very much, Jehan Ara. It was delightful talking to you. It was fun talking to you too. And very insightful. I'd like to end with what Seema put out. I think you deserve that from all of us. Here it is. It's a heart. Oh. Thank you for doing the work that you're doing. Thank you. Would you like to share how can people reach out to Nest.io if they have, idea में skin लगा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो जहाँ ने कहा, तो कैसे reach out कर सकते हैं? So go to our website, thenestio.com, or send us an email at info@thenestio.com. info@thenestio.com. Very easy to get to Nest.io. Nest.io बहुत मजेदार conversations कर रहा है इस टाइम के अंदर भी, और specifically startups के लिए, entrepreneurial ecosystem के लिए बहुत ही खास मेहमान होते हैं उस पे. So do reach out to Nest.io and do subscribe to the Nest.io pages. Thank you very much, Ahaba, once again, and thank you all of you. Keep learning, make the most of. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Make the most of Ramzan, make the most of Corona. सीखते रहें, बढ़ते रहें. आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you very much. मोहसिन, आमना, हिशाम सरवर भी बड़े खास आदमी हैं. इनको देख लें, इन तक पहुंच जाएं अगर आप फ्रीलांसिंग जानना चाहते हैं. And Hisham, I would love it if you join me very, very soon on the quarantine series. आप सबका बहुत शुक्रिया. Inshallah, until next time.